अस्सलाम वालेकुम। 2-3 दिन पहले आरएसएस के सरसंचालक श्री मोहन भागवत जी ने जो बातें कही हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं। हम तमाम हिंदुस्तानियों को उन पर गौर करने, उन्हें मानने और उन पर अमल करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क सारे जहाँ से अच्छा एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग बसते हैं। यही हमारे मुल्क की खूबी है। इस खूबी को जाने या अनजाने में मिटाने की कोशिश करने वाले गद्दार ही समझे जाएंगे, इसमें शक नहीं। हमें अफसोस हो रहा था कि क्यों हमारा मुल्क कुछ खतरे में पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के लोगों को भी और हमारे मुल्क को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा और दुनिया की नज़र में हमारे मुल्क की बदनामी होगी। हम तो सारे जहां से अच्छा कहते हैं, जैसे भी हो। श्री मोहन भागवत जी ने जो बातें कही हैं वो सर आँखों पर, उन्होंने देर ही सही अच्छी बातें कही हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, भारत वर्ष से प्रेम करने के नाते, भारतवर्ष का प्रेमी होने के नाते उनकी बातों को आदर के साथ सुना हूँ इस बार भी, जबकि उनकी बातों में बहुत बड़ी बातें मौजूद थी। उनको सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट साहब ने एक ओपन लेटर लिखा है, इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये खुला खत भी बहुत अच्छा है। यही हमारे मुल्क की खूबी है। इसमें अलग अलग राय हो सकते हैं, मगर अलग अलग राय के अंदर भी अगर मुल्क की भलाई व बहबूदी की बातें होती हैं तो उन्हें हमें मानने के साथ साथ अमल में लाने की भी हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। तो आइए मैं आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने आरएसएस सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी की बातों के सिलसिले में जो बातें कही हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। और से सुनिएगा, समझिएगा और खुश होइएगा कि हमारे मुल्क में किस तरह की अच्छी बातें हो रही हैं। An open letter to RSS Chief Mohan Bhagwat. The call for communal harmony coming from you, the head of an influential Hindu organization, is the best thing that could have happened at this point of time, writes Prashant Padmanabhan. 21st December 2024 to Mohan Bhagwat, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS सरसंघचालक. It was heartening to read about your recent statement stressing the need for communal harmony. Undoubtedly, the strength of Bharat is her all-encompassing nature. The journey must be by holding the hands of everyone who wants to live in a prosperous
resurgent India, you have rekindled that hope in an atmosphere of utter distrust and desperation. If every citizen is equal, as you have rightly pointed out, the urgent need is to empower each one of them instead of further increasing the population in the most populous country on earth. Why this letter to you now? Reasons are more or less similar to what former Chief Election Commissioner CEC S.Y. Qureshi had pointed out after meeting you some 2 years ago. The insecurity felt by the marginalized in general and Muslims in particular, who are proud of a distinct faith and culture of their own, and the atmosphere of hate created by hardcore proponents of Hindutva politics. Qureshi had written about your assurances that 1. Hindutva is an inclusive concept in which all communities have equal room. 2. The country can progress only when all communities are united, and that 3. The Indian Constitution is sacrosanct. Contrary to your earlier advice that there is no need to look for a shilling in every mosque, there were attempts across the country to rack up the past, and suits were entertained by civil courts till recently, when the Supreme Court pressed the pause button. As a citizen hailing from southernmost part of this great nation, I was deeply worried when the policies of the Union government seemingly treated Hindutva as the default culture of this multicultural, multi-faith, and most diverse nation on earth. Enactment of Citizenship Amendment Act 2019, giving a differential treatment for citizenship based on faith, laying the foundation of a Hindu temple at Ayodhya by the Prime Minister of secular India. Thereafter, its inauguration by the Prime Minister recited of religious shlokas at the inauguration of the new Parliament building, that too on May 28, 2023, V.D. Savarkar's birth anniversary. Many indirect references to the Muslim community in the Prime Minister's election speeches all gave me a feeling that India has certainly derailed from the path of acceptance of all faiths as advocated by Swami Vivekananda. You may kindly remember that the Prime Minister, in his widely televised speech on the occasion of Ayodhya temple inauguration, has not referred to the mosque to be built by Muslims, consequent to the same judgment of the Supreme Court. The final blow to my faith in the democratic institutions and its impartiality came when a sitting High Court judge gave a speech about the virtues and vices of two communities. Unfortunately, the Chief Minister of Uttar Pradesh, who has high regard for you, has spoken in support of that statement. A correction, even at this later stage, is essential to spread a message
that this land belongs to all, irrespective of their beliefs. It has now come to public knowledge that Justice Shekhar Kumar Yadav had close connections with the RSS. Let me plead with folded hands to exercise all your moral authority to rectify the narrative in the speech of Justice Yadav. The fundamental flaws in the ideas presented by Justice Yadav are as follows. Will of majority prevailing upon the minority is a dangerous proposition anywhere in the constitutional democracies. Minority Hindus are at the receiving end in Bangladesh recently. The plight of minorities in Pakistan or Afghanistan is nothing worthy of emulation elsewhere. Uniform Civil Code is included as a directive principle of state policy for achieving social justice, equal justice for every individual, irrespective of her faith, is entirely different from imposing the will of the majority upon minority. Though the judge has proudly narrated the virtues of Hindu laws, he has conveniently forgotten the fact that B.R. Ambedkar faced stiff resistance from the Hindu orthodoxy at a time when he tried to codify Hindu laws. He has also forgotten the counter-majoritarian role of judiciary in protecting every citizen and in that process to give special care for those who are most vulnerable, Dalits, Adivasis, women and minorities, religious, linguistic and ethnic. As you have suggested recently, everyone in this great nation is equal and deserves equal respect. I belong to a minority by language, Malayalam, by culture, Dravidian, and I feel an equal part of this great nation because we all are treated equal stakeholders in this democracy. The Constitution assures equal treatment and non-discrimination. Even if one looks from the angle of cultural heritage, there cannot be any difference between people professing different faiths. In the collective works of Swami Vivekananda, who by no means is a lesser Hindu than anyone else, there is not a single word of hatred towards anyone. He had immense faith in this great nation, even when she was extremely poor and in shackles. If Hindu majority of this country had imbibed those values, there would have been no incidents of repeated communal violence. The call for communal harmony coming from you, the head of an influential Hindu organization, is the best thing that could have happened at this point of time. I wish and hope that this message of communal harmony is reiterated whenever there is a derailment, and all your followers will heed to that advice. Communal harmony alone will assure peaceful coexistence, and the Hindu, as the cultural majority, has the greater responsibility in assuring that.
Thank you, Prashant Padmanabhan, Advocate, Supreme Court. हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब बहुत सी बातें हमारे मुल्क में बदलेंगी। आरएसएस के सरसंघचालक ने जो बातें कही हैं उन पर इंशाअल्लाह अमल किया जाएगा, क्योंकि आरएसएस के चीफ श्री मोहन भागवत जी को मानने वाले हमारे मुल्क में करोड़ों में हैं और वो एक ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी बातों पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत पद्मनाभन ने जो बातें कही हैं वो भी हमारे लिए गौर करने के लिए ज़रूरी है। हमारा मुल्क महान है, इसमें संदेह नहीं है। हम सबको मिलजुल कर हमारे मुल्क को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हमारा मज़हब चाहे जो भी हो, हम हिंदुस्तानी हैं। हमें चाहिए कि इंसानियत को अहमियत देते हुए तमाम मज़ाहब के लोगों के साथ दोस्ती से रहते हुए, जैसा कि सदियों से एक गंगा जमुना तहजीब रही है, मिलजुल कर रहने की कोशिश करेंगे और फ़िरक़ा परस्तों को कोई अहमियत नहीं देंगे तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारा मुल्क और ताकतवर बनेगा। और जैसा कि हमारे मरहूम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे, आवर कंट्री शुड बिकम ए सुपर पावर। इंशाअल्लाह ये हो सकता है, मगर शर्त यह है कि हम सब एक हो जाए, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए भाईचारे की उत्पन्न हो जाए, हमारे अंदर सबके लिए खुलूस का जज्बा पैदा हो जाए और हमारे दिल में ये ख्याल आ जाए कि हम सबसे मोहब्बत करें और किसी से दुश्मनी नहीं, तो हमारा मुल्क सुपर पावर अवश्य होगा। यही ख्वाब था मरहूम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का। इंशाअल्लाह हम देख सकते हैं हमारे मुल्क को सुपर पावर बनते हुए। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।